मेरे 13% पोर्टफोलियो पे गेन थे अभी 8-10 दिन पहले। 2% रियलाइज हुए हैं, 10% चला गया। तो मतलब उस टाइम बड़ा वो लगा कि लॉस सारे रियलाइज हो गए थे। जब मैं लेने की ट्रेड ले रहा था तो लॉसेज जो हो रहे थे वो तो इंट्राडे में रियलाइज होते जा रहे थे। प्रॉफिट अच्छा खासा अनरियलाइज जा रहा था, 12-13% तक मेरा अनरियलाइज था। लास्ट में रियलाइज 2% हुआ और एवरीथिंग स्क्वेटेड इन लास्ट 4-5 डेज। सो दैट इज सेम जो आदित्य का साथ हो रहा है वही। ओके, एक काम करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने कैप्चर रेशियो डिस्कस किया था क्या? जब भी हम लोग बात करते रहते हैं ना, बैलेंसिंग बिटवीन एन एंटिसिपेशन एंड अ कंफर्मेशन। ओके, इट विल नेवर बी 100% ऑन ईदर साइड। ओके, यू नीड एनफ कंफर्मेशन टू एंटिसिपेट, that is your best entry. By taking a 2 hour or a 3 hour kind of a trade at times does not come down below your dignity. ठीक है, it does not mean that you always need to buy only for 20-hour trades. It's good if you get it, but many a times the practical reality of trading is that you need to keep your portfolio moving. You need to keep it in momentum. Okay, so a lot more of times you need to work for regularity of profits than magnitude of it. Okay, especially if you're going to dedicate a lot more of time or are trying to do it full time. Okay, that is what is many a times actually needed for your mental sanity. This is anyway a tough game. Don't make it tougher for yourself by only trying to hit sixes. तो ज्यादा कुछ मूवमेंट मेरे को मिला नहीं, मतलब सब सपोज आई गेट 5 to 6 ट्रेड्स, दो में प्रॉफिट होगा, तीन में लॉस होगा, बराबर हो जाएगा, राइट? एंड ऑफ द डे इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट बैलेंस्ड आउट। Hmm. तो आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग। Okay. Is everyone facing that problem? End of day squat वाला? एंड ऑफ डे या नेक्स्ट डे हो नहीं। जा रहा है। या नेक्स्ट डे वो Um, लैक ऑफ फॉलो थ्रू वाला? इज एवरीवन लाइक हाँ गिविंग बैक एवरी प्रॉफिट वाला सिंगल, लास्ट टाइम होता? यस, हम्म, एवरी हाँ सिंगल स्टॉक। अच्छा हाँ, चलो। नेक्स्ट डे वो वबाग भी वही किया। मैं एक्चुअली राजू। में अपना स्टॉप किड लॉस ब्रेक इवन पे नहीं लाता, तो इसलिए वो नहीं हो रहा है। मे बी अभी मेरी पोजीशन तो सारी की सारी ऑलरेडी उसमें पॉजिटिव में ही है फिलहाल। We'll take that. I'm giving back all my gains and actually healthy gains. So I'm not able to retain most of it. ओके ठीक है, चलो लेट्स एक्चुअली आई विल ऐड ऑन दिस। मेरे 13% पोर्टफोलियो पे गेन थे अभी 8-10 दिन पहले। 2% रियलाइज हुए हैं, 10% चला गया। तो मतलब उस टाइम बड़ा वो लगा कि लॉस सारे रियलाइज हो गए थे। जब मैं लेने की ट्रेड ले रहा था तो लॉसेज जो हो रहे थे वो तो इंट्राडे में रियलाइज होते जा रहे थे। प्रॉफिट अच्छा खासा अनरियलाइज जा रहा था, 12-13% तक मेरा अनरियलाइज था। लास्ट में रियलाइज 2% हुआ और एवरीथिंग स्क्वेटेड इन लास्ट 4-5 डेज। सो दैट इज सेम जो आदित्य का साथ हो रहा है वही। ओके, एक काम करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने कैप्चर रेशियो डिस्कस किया था क्या? नहीं। प्रॉफिट का नहीं ना? वेट, नहीं। लेट एवरीवन टेक दैट एक्सरसाइज फर्स्ट। आज ही करते हैं। कल तक जस्ट पुट इट ऑन टू द डिस्कॉर्ड। आई शो यू एन एग्जांपल व्हाट इट इज। कोई एक स्टॉक ले लेता हूँ, लेट मी टेक, या तो चलो कोई, हाँ ठीक है यही ले लेते Become. हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। अमित फोटो ले रहे हो तो भेज दूंगा। नहीं नहीं, फोटो नहीं ले रहा, मैसेज आ रहा है ग्रुप अच्छा पे। ठीक है। अच्छा ठीक है। चल, आई टेल यू व्हाट द कैप्चर रेशियो आइडियली इज। ये बहुत कॉमन रेशियो है जो हम लोग प्रॉप बुक्स में यूज करते हैं, ठीक है? दिस इज आइडियली टू ऑप्टिमाइज योर सेल रूल्स। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी ये नेटवेब का एक ट्रेड था। ये ऑरेंज लाइन दिख रहा है यहाँ पे 2162 का। ठीक है, दिस इज वेयर माई फर्स्ट एंट्री वॉज। ठीक है, वन। अभी वहां से लेके इफ यू सी, इट हैज गॉन अप टू नियरली 4479। ठीक है, सो इट हैज थियोरेटिकली गॉन अप व्हाट, नियरली 108%। Yes. Okay, my sizing on this stock when I took it was roughly about 35%. अभी सपोज यहाँ पे आई एंटर्ड फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। ठीक है, इट इज रफली 107% अप। ठीक है, इफ आई वुड हैव बीन इन द स्टॉक फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, ठीक है, एकदम बॉट जहां से एंट्री ली एकदम अगर टॉप पकड़ा होता, ठीक है, ऑन द 35% साइज आई वुड हैव रफली हैड अबाउट 40% ऑफ पोर्टफोलियो इम्पैक्ट। Yes. करेक्ट, मतलब 35% into roughly about 106, 107%. Correct. At the end, this stock only gave me about 14 to 15% of portfolio return. So what did I end up doing? I actually captured only 40% of the total move that was available to me. करेक्ट। अभी इसमें हुआ क्या? अभी सपोज ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है,
I sold about 50% of the total position here. ठीक है, and I never bought it back. ठीक है, तो यहां से जितना मूव था, I missed about half of the move and half of the size. So a lot of my position portfolio got lost there. ठीक है, उसके बाद सेकंड ये वाला जो है, यहां पे आई सोल्ड ऑफ द बैलेंस पोजीशन ऑन वीकनेस, एंड यहां से लेके इफ यू टेक इट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, देयर इज रफली अनदर व्हाट 10 to 15% which is lost. Okay, on a prop book level, we normally consider a 70% plus ratio to be very good. So if the total move is say 40%, anything which I capture about 28 to 30% is good enough. ठीक है, अभी अगर तुम एक्चुअली देखोगे, वेयर डिड आई लूज इन दिस ट्रेड? बाय दिस पार्शियल सेल एंड नॉट सेलिंग इट बैक एंड नॉट बाइंग इट बैक. करेक्ट, दिस इज ऑन अ मैग्नीट्यूड ट्रेड वन. आपके केस में सपोज और एक दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा, अगर सपोज बाबा गिलन, ठीक है, सपोज किसी ने यहाँ पे खरीद लिया होता. ओके, नाउ इफ ही इज प्लेइंग एज एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, व्हाट वुड हैव हैपेंड? वो अगर सपोज आपने अगले 2 या 3 दिन में बेच दिया, correct, and you have lost out on the whole move, your capture ratio is still going to be very bad. correct, अभी Yes. इसमें स्किल कहां पे आ जाता है? नाउ सपोज इफ यू बाइट हियर फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज आपने यहां पे लिया, यहां से ऊपर गया, अगले दिन रिवर्स हो गया. ठीक है, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम यू विल फेस कि भाई यहां से सपोज आपने सपोज 1.5% स्टॉप लॉस लिया होगा, it went up to about 6-7%, so you are about 4 to 5 hours. Okay, you end up at zero. Yes. Okay, and your total capture becomes zero. That is where a lot of the problem comes in. Okay, so Yes. two ways how we actually do this. Okay, अगर आप मैग्नीट्यूड पे कैप्चर रेशियो कंपेयर कर रहे हो, राइट, इट विल ऑलवेज बी ऑन द टोटलिटी ऑफ द मूव. ठीक है, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव इज you are trying to hold it as much as possible and giving it room to trail. Okay, if you are not giving it room to trail, obviously you are going to get chicken out. ठीक है, but if you are playing velocity, okay, velocity में क्या होता है, how we actually start taking it is, I'll show you a sell rule. यहाँ पे तो देख लिया, और कोई स्टॉक बताओगे जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हुआ था? चलो एक काम करता हूँ, पारस ले लेता हूँ. हाँ, पारस also. यहाँ पे ले लेता है. ठीक है, अभी सबसे पहले बोलो, लेट अस डिटरमाइन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड. ठीक है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर सेक्टर. Yes. ओके, यहाँ पे द स्ट्रेंथ ऑफ द मूव इज क्वाइट हाई, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव. इट हैज मूव्ड Yes. अप नियरली अबाउट 70-80% इन लेस देन अ मंथ. कितना मूव किया? Yes. Roughly about 65% in hardly what 15 days. Very strong move. ठीक है, even the Yes. pullback is stronger. ओके, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं. इज द कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक डिटरमाइनिंग फॉर द शॉर्टर टर्म ट्रेड? आर वी प्लेइंग अ टेक्निकल बाउंस और आर वी प्लेइंग इट फॉर द लॉन्गर टर्म मूव? Technical Playing bounce. it for the longer time. मैं तो लॉन्गर का सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये रीबाउंस होगा और इसमें अर्जेंसी है तो ये अब वापस अपना मूव रीस्टार्ट कर देगा. एंड मैं उसको ऊपर जितना ऊपर जाए उतना मूव उसका कैप्चर करना चाहूंगा. 2-3 दिन में बेचने का अभी नहीं है ऐसा. ठीक है, तो अगर वो मोटिव है हरेंद्र, देन यू आर कैप्चरिंग, मतलब आप जो कैप्चर रेशियो कैलकुलेट करोगे, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन वीकनेस, जैसे नेटवेब पे किया था. आपका जो Yes. एक्चुअल लॉस ऑफ कैप्चर होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रॉम द टॉप, नॉट फ्रॉम द बॉटम. करेक्ट, Yes. तो होना क्या चाहिए? सपोज एकदम ऊपर चला गया, नीचे आने लगा और आपका स्टॉप आउट यहाँ पे होना चाहिए. करेक्ट, सो योर कैप्चर रेशियो शुड Yes. बी लॉस्ट हियर, नॉट हियर. करेक्ट. ओके, हाँ, इज एनीवन Yes. प्लेइंग इट फॉर द शॉर्टर टर्म मूव? Yes. Yeah, I can play Yes. technical, It's a just basic reversal. 3-4 days Yeah. bounce. Okay, why would you play it Yeah. for technical? मतलब, do you think that the stock character is not good enough? It'll have a lot of supply. A lot of people might be stuck and might be taking profits once the bounce happens. Okay, So तो अगर आदित्य यहाँ पे suppose bounce हुआ and it starts consolidating on the side, starts basing up, will your objective change then? well, I'll take the profits out and then observe. And if I find a setup again, I'll re-enter.
Okay, so if you are now playing only for the technical bounce, right? Okay, beyond the point, you are not going to sell into weakness, like how Harendra is going to do. ठीक है, आप ट्रेल क्या करने वाले हो? यू आर गोइंग टू ट्रेल इट वेरी फास्ट, ठीक है, एंड सेल इट बेस्ड ऑन व्हाट, ईदर अ न्यूमेरिकल सम रूल, राइट, या तो आर मल्टीपल, या तो कोई नंबर के ऊपर, या कोई मूविंग एवरेज के ऊपर. यू आर गोइंग टू यूज सम और द अदर एंकर पॉइंट टू सेल. Correct? The let go there is the moment you sell, there will be a lot more of up move that can happen there after you sell. Okay. What is Harinder's let go? That he will lose a lot from the top in selling by a weakness. Correct? Both of you have absolutely the opposite let goes in this case. Mm-hmm. ठीक Yes. है. अभी अगर मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, लेट मी टेक दिस. अभी आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ बायस, तो मेरे को याद है, बट आई टेल यू हाउ दिस वर्कड आउट. ठीक है, अभी इसको 5 मिनट पे ले. लेट अस टेक द एंट्री एंड हाउ वी वुड हैव एक्चुअली सोल्ड इट इन अ शॉर्ट टर्म ट्रेड. ठीक है, विल टेक इट. Yeah. या पहले ये लेते हैं. अच्छा, सबसे पहले ये लेते हैं ऑन द एंट्री पार्ट ऑफ इट. दिस इज द वन. सॉरी, हाउ डू वी एंटिसिपेट एन एंट्री हियर? बार बाय बार में द बेस्ट इज व्हाट, अ गैप डाउन एंड अ रिवर्सल, चिराग वाला एंट्री. Yeah. Yeah. Okay, or a flat open and an upswing, opening range देखने टूटने लगा तो, if it flat opens and if it immediately starts going up, I can buy over the 1 minute also. Yeah. Correct, because immediately I get in the confirmation in the first minute and the open itself that the pullback is right now reversing. I don't even need to many a times wait for the 5. Yeah. Yes. करेक्ट. अच्छा, अभी इसको उल्टा पूछता हूँ. जो आदित्य बोल रहा था ना, सप्लाई आएगा, इफ इट एक्चुअली गैप्स अप, इज इट अ गुड मेथड और अ बैड वन? इज इट अ गुड ओपन और अ बैड? Good open. No, it's a bad open. It's a bad offer. But stock is strong, na? It is showing signs of reversal. You're not getting entry, but But stock is strong. yeah, Then yes, this we that is discussed the issue. And last. There'll be This we higher discussed chances last of time also, spotting. na? If it gets up, people see it as an Yes, opportunity. but हाँ ठीक है, वो आपको 1 And मिनट की ओपनिंग ना एंट्री ना मिले, बट इसका मतलब बायर्स है ना. हाँ, वो लेकिन लेकिन बात वो ज्यादा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी. ये But it हमने डिस्कस किया happens. था ना लास्ट टाइम कि वो अगर हाँ. ऊपर खुलेगा तो लिमिटेड फायर पावर होगी, तो वो स्क्वाट करने के चांसेस ज्यादा होंगे. Yeah. अगर बुल्स अर्जेंसी, मतलब बुल्स को उतनी अर्जेंसी नहीं होगी और वो डिफेंड नहीं करना चाहेंगे, तो वो वापस से नीचे आ जाएगा. इसका एक एंटीथेसिस तो नितिन, ठीक है, हम्म. अभी तक स्टॉक आपके लिए स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? हम्म. हैज इट ब्रोकन कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेंथ येट फॉर यू? नॉट येट, बट हाँ मैंने बेच दिया था. नहीं नहीं, वो छोड़ना. आज के दिन पे एक ऑब्जेक्टिवली ले, यू आर नॉट इन द ट्रेड और यू हैव नेवर टेकन अ ट्रेड. हैज दिस लॉस्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर यू? नो. नो, राइट. अभी एक बात बताओ, व्हाट वी आर राइट नाउ प्रायोरिटाइजिंग नो इज ओनली फॉर एंट्री. ओके, हम लोग बार बाय बार में बाई डिफॉल्ट बहुत बार एंटीथेसिस क्या बोलते थे कि कहीं पे मर रहा होगा स्टॉक, सडनली गैप अप हो गया तो इट बिकम्स अ ब्रूटस. ओके, इट मे बी गुड फॉर द स्टॉक, बट इज इट रियली गुड फॉर द एंट्री? नॉट फॉर द एंट्री. एग्जैक्टली, करेक्ट. तो अगर यहाँ पे अगर गैप अप हो गया, इट में एक्चुअली शो स्ट्रेंथ, but I will have to validate that strength to sustain over the day to actually take in an entry. हाँ, फिर वो ओपनिंग में नहीं मिलेगी, फिर आपको थोड़ा वेट करना Correct. तो पड़ेगा, अगर देखना मैं बुल पड़ेगा. हूँ, I would rather prefer an entry here for reversal than here for a करेक्ट. reversal. करेक्ट. You get in a much better point, right? या Your logic is absolutely correct that a gap up will show strength, but I am already assuming strength and now optimizing for entry. ओके, गॉट Right? इट. चलो, अभी आगे जाता हूँ. I'll play it on a 1 minute, then I'll take it on a longer time frame. ठीक है. Now this is the 1 minute. This is how it looks like. Is this entry ready or do we need more confirmation? कंफर्मेशन. More confirmation. क्या चाहिए प्रीतु? So अब इसके actually वन it is 1 entry मिनट. ready, लेकिन ये स्क्वेट करेगा अभी, पता है, इसलिए ये सही नहीं है.
We know हाँ that he squat करेगा क्योंकि किया है, हमने ट्राई किया भाई इसको यहाँ पे. You can leave an order at 1 minute high. So even if it squats and reverses, then it's your order fills and that gives you a confirmation. ओके. हाँ, हम लोग जब इसके 2 मिनट पहले बात कर रहे थे, व्हेन वी डिसाइडेड ऑन अ फ्लैट ओपन, इज दिस नॉट व्हाट वी वांटेड टू सी? Yes. Yes. ओके. तो अगर स्क्वाट कर रहा है हरेंद्र, क्या लॉजिक से स्क्वाट करेगा? सपोज तुमने यहाँ पे एंट्री डाल दिया. नहीं, इसने एक्चुअल में किया था, वो याद है इसलिए बता रहा हूँ. हाँ ठीक है, चलो दिखाता हूँ स्क्वाट होता है क्या, दिखता और है. हाँ, हाँ, क्योंकि ये स्क्वाट नहीं हुआ था भाई वैसे. So this day I okay, entered at 12:41. तो मेरा हाँ. तो शायद प्रीवियस डे हाई पे मैंने लगा के छोड़ दिया होगा बिकॉज 1 मिनट में मैं couldn't take action so नहीं, तो एक fast. तो मैं वही आ रहा था इसके लिए. इफ यू एक्चुअली टेक द प्रीवियस डे हाई विच इज 1240, ओके, वी वो आएगा एंट्रीज में वेर वी से डिफरेंशिएट बिटवीन अ होलसेल एंट्री एंड अ रिटेल एंट्री. ओके. द मोर Okay. यू एंड अप कंफर्मिंग फॉर योर एंट्री, आप कंफर्मेशन क्या ले रहे हो नितिन? ठीक है. At confirmation, you will either wait for some or the other high to be broken, a swing high or a previous day high, some or the other मतलब resistance levels or pseudo lines to be broken. Hmm. Okay, the moment Yeah, you're taking that, you are expecting someone else to fill your buy. yes, for me it is good enough. I would Okay. have taken the entry here. हाँ, so the first point of getting into a velocity, अभी एंट्री भी जब वीकेंड पे लेंगे ना, is to get at a point where you become risk free very fast. ओके. होलसेल एंट्री का तुम लॉजिक क्या कर रहे हो ना, जब भी हम लोग बात करते रहते हैं ना, बैलेंसिंग बिटवीन एन एंटिसिपेशन एंड अ कंफर्मेशन. ओके. इट विल नेवर बी 100% ऑन ईदर साइड. ओके. यू नीड एनफ कंफर्मेशन टू एंटिसिपेट. दैट इज योर बेस्ट एंट्री. So Okay. Anurag, in that case, let's say I have 5 stocks like that, okay, Yeah. showing same behavior at 9:15, okay. So how do I know कि इसमें entry ले लेना चाहिए सब नहीं और कर पाओगे. किस पे लेना If you चाहिए? are at 9:15 and waiting हाँ. for a 1 minute entry, you can't do हम्म. everything. बिकॉज या तो अगर तुम कोड करके डाल दे रहे हो कि ये फिल्टर मैच हो गया, फिल हो गया, तो अलग बात है. ओके. बट इन दिस केस तुम अगर 9:15 पे यही, सपोज मेरे को याद है क्योंकि ये दिन पे ऐसा 4 या 5 पुल बैक थे सेटअप. ठीक है. हम्म. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट एन इंडिकेशन फ्रॉम? यू आर ओपन. Yeah. ठीक है. 901 or whichever broker you are using at 907, you'll exactly get to know which entry is going to be more suitable for you. ठीक है. अभी 9:15 को तुमको क्या दिखेगा सचिन? यहाँ पे तुमको फ्लैट ओपन दिख रहा है. से Right. फॉर एग्जाम्पल तुमको और कहीं पे नेगेटिव ओपन दिखा होता. ठीक है. तो तुम उसमें क्या टारगेट, तुम्हारा एक्चुअल प्लान क्या था उसमें? वो नीचे जाके ऊपर आएगा. Correct. सो इवन इफ इट ट्रिगर्स, इट विल एंड अप ट्रिगरिंग एट व्हाट, 9:20 और आफ्टर. Right. Correct. If it is a flat open, only then are you looking at a first minute or a very early entry. करेक्ट ना. अभी जैसे ईपी वाला देश पकड़ ले आज के दिन पे. ठीक है. कल का ही दिन पकड़ लो. जस्ट डायल था, एवलॉन था, और एक कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर, समथिंग व्हिच वाज देयर. LTF, Avantel था, ये एलएनडी LTF, LTF. ठीक LTF. है. नाउ आई वाज लुकिंग एट ऑल द थ्री. ठीक है. अभी एवलॉन में डालने गया तब तक वो निकल गया. ठीक है. इट रैन अवे, आई वाज टू स्लो. द सेकेंड एंट्री विच आई गॉट वाज जस्ट डायल. एंड जस्ट डायल मतलब इट वाज जस्ट लकी दैट इट वर्क. बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज एक्चुअली एवलॉन विच डिडंट वर्क. ठीक है. इट इज वेरी कॉमन टू लूज मेनी ट्रेड्स इफ यू आर पुटिंग इट एट 9:15 to 9:20 लेवल्स. बिकॉज वहां पे एक ही चीज काम आने वाला है सजल, कि तुम्हारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना फास्ट है और तुम टाइप कितना फास्ट करते हो. और ये होता क्या है पता है? दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस जॉब. इट फाइनली कम्स डाउन टू हाउ यू आर सेटिंग अप योर सिस्टम. तो अभी जैसे मैं बैठा हूं, राइट, व्हाई डू आई हैव 2 monitors? इट इज प्योरली बियॉन्ड द पॉइंट. मैं भी पहले लैपटॉप पे ही ट्रेड कर रहा था. ओके. A second screen came so that I was able to look at that screen, not put an alt tab continuously and punch in an order very fast. ठीक है. देन अ सेकेंड ऑल्ट कीबोर्ड केम कि ताकि तुम्हारा टाइपिंग स्पीड, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन ऑन नंबर्स एंड एवरीथिंग, बिकम्स इजियर. व्हाट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, यू आर स्लो बिकॉज यू हैव केप्ट अ सिस्टम विच इज स्लो. तो अगर नितिन सिर्फ एक बैठ के कीबोर्ड पे टाइप करता रहेगा विद नॉट इवन अ नम पैड, राइट, यू आर गोइंग टू लुक एट 1 2 3 वर्टिकली एंड गोइंग टू बी ऑब्वियसली स्लो. If you're playing this game, then you need a bat of the right weight.
ठीक है। अभी अगर तुमने ये स्टॉक पहले से प्री डिटरमाइन नहीं किया होता सचिन, यू वुड हैव लॉस्ट द इनिशियल एंट्री। Yeah. ठीक है, पहला 5 मिनट तो नहीं ट्रेड कर पाते। इट इज एब्सोल्युटली फाइन इफ यू डोंट, बट देन विल बी विलिंग टू लेट गो एंड देन विल फाइंड अदर स्कैन्स टू स्कैन इट आउट ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये तो अभी एक एंट्री डिसाइड किया है ना, अभी आगे और बार 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 प्ले करेंगे तो और एंट्रीज आएंगे इस पर। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। सो लेट मी पुट इन अ बिड हियर फॉर एग्जांपल। हरिंदर, अगर Yes. बोल रहे हो ना स्क्वाट होगा, ठीक है, Hmm. व्हाट इज माय वर्स्ट पॉसिबल स्क्वाट इफ दिस फिल्स हियर, इमीडिएटली हैव Hmm. 1 or 2 to 3 रेड बार्स, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है एंड आई एम आउट। Yes. दैट इज द ओनली Yes. केस आई एम टेकिंग अ -1 hour कंप्लीटली। Yes. ठीक है, चलो आई विल गो। ठीक है, मच बेटर। नितिन, अभी टाइम Yes. मिल गया तुमको डालने के लिए? यू गॉट इन अ बेटर एंकर पॉइंट? हाँ जी, वो तो मिल गया। मैं भी वेल वही सोचा था कि क्यों नहीं कर पाता हूँ, मे बी बिकॉज मैं वो नेल डाउन नहीं करता हूँ स्टॉक्स को कि मुझे यही प्राइमरली देखने हैं। वो मैं 6-7 स्टॉक्स देख रहा होता हूँ, तो फिर उसमें टाइम लग जाता है शायद। दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो मुझे नितिन, वो एक समझ ही ले, अगर 9:15 जब तुम देख रहे हो ना, इट इज अ प्योर, हम्म, क्या बोलूं, प्रोसीजरल पार्ट। अभी अभी कल का रिजल्ट अगर पकड़ता हूँ, ठीक है, ये देख, आज ही का देख लो, कल का अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। तुम्हारे पास आज 6 से 7 स्टॉक है, ठीक है, दो तो Yes. हटा दे। यू हैव रफली अबाउट 4 स्टेप्स दैट यू नीड टू लुक इन द मॉर्निंग। ओके। Okay. Every time there is an EP, my focus out of the other momentum setups in the first 10 minutes is going to go for a toss. Okay. I cannot look at EP and every other momentum stock together. It is not possible. Okay. So the moment you prioritize something for an initial 1 or 5 minute entry, right? You are letting go of something else which you are not going to take within that 5 minutes. क्योंकि तुम यहां पे भी अगर ले रहे हो ना, तुम इतना प्रिसिशन के लिए एक एक मिनट ये बाल देख रहे हो ना, करेक्ट? नाउ दिस इज माइक्रो मैनेजमेंट, वी डोंट नीड टू डू इट, सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड इफ एनीवन एल्स इज, विल फिगर आउट अ वे हाउ टू डू इट। ठीक है, आगे जाता हूं। या नाउ फिल्ड। Yes. Yeah. ठीक है, अभी सपोज इफ यू टेक इन अ डिफॉल्ट 1.5% काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस, ठीक है, रफली कम्स टू द डे लो, Hmm. Yes. गुड लेवल टू हैव अ स्टॉप लॉस। Yes. ठीक है, चलो आगे जाता हूं। ठीक है, अभी a much better bar, the perfect bar that we actually wanted। ठीक है, Yes. नीचे जाके it has retested levels and come back। Yes. आगे जाते, ओके। अभी यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था, इज देयर एनी अदर प्लेस वेयर आई कुड हैव टेकन इट? कैन आई रेज द स्टॉप लॉस? Yeah, we can raise Yes. to the impulse candle, the second or third candle. यहाँ पे Yes. This. हाँ, Yes. वो This भी one. चलेगा, वो भी सही रहेगा। कि यहाँ पे? नहीं, I ऊपर prefer वाले पे. the I ऊपर prefer वाला. the second one, but पूरा भी चलेगा। ये वाला? Yes. ओके, यहाँ पे कैन आई इमीडिएटली टेक इट एट कॉस्ट प्लस? इज इट गुड इनफ? No, no, Oh. many a times. First 5 minutes are very volatile normally, right? So high probability it will just hit the SL. ओके, अगर समझ से दिस इज व्हाट रफली अबाउट 14 रुपीज, राइट? और ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो आई विल क्रॉस 1 hour, नो? Yes. Yeah. ओके, इफ इट क्रॉसेस 1 hour एंड इफ आई जस्ट कीप अ रूल कि भाई 1 hour के ऊपर चले जाएगा, इज दैट अ गुड रूल टू कीप इट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? Yes. No. इज द स्टॉक आउट ऑफ द वुड्स येट? No. No. तो अगर ये थोड़ा ऊपर होता, यहाँ पे पकड़ ले हाँ, दीपांशु, एक 3-4 रुपए भी अगर ऊपर होता, तेरा 1 hour क्रॉस कर दिया होता। So if right. you just keep out a static rule, okay, of a 1 hour, your shakeout ratio is going to be much higher. ठीक है, so a lot of you that are actually getting shaken out is because of that static rule. ठीक है, अभी if actually it has to go up, right? If I suppose यहाँ पे assume करो कि यहाँ पे consolidate होने लगता है, okay, it starts basing out here, ठीक है, and then goes up. It has Then not even gone 1 hour,
but it has given me a much better anchor point to raise my stop loss up. वो बेस का लो जो बनेगा. Why? Because वो जो मोमेंटम पॉज पे देखते थे ना, what were we looking at? We were looking at demand pause and demand resumption again. Okay, this is exactly what we got. The moment we got demand, we got in a pause, and we now, the moment a new demand resumption comes, our stop loss here becomes a good anchor point. Yes. Yeah. करेक्ट वन. तो सबसे पहले हरेंद्र के साथ भी जो डिस्कस कर रहे थे ना, द पॉइंट इज व्हेन यू आर गेटिंग इनटू चॉपी मार्केट्स, राइट, डोंट एक्सपेक्ट और प्ले ऑलवेज फॉर द अपसाइड. प्रोटेक्ट योर डाउन साइड फर्स्ट, एंड अपसाइड है ना नेक्स्ट लेवल प्रोटेक्शन है. डोंट ट्रेल Yes. योर स्टॉप लॉस सो Yes. लो that you keep on waiting for the squad to come and take you out. Uh, In a choppy market, or sometimes where the market is not doing too well, which is 70% of the times in a year, expect yourselves to get stopped out and then play accordingly so that you don't. तुम्हारा पहला कर्तव्य ये है कि भाई ट्रेड डालो जितना डाल सकते हो और जितना जल्दी स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आ सकते हो. दैट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी एज अ ट्रेडर. ओके, लेट्स गो अहेड. So you will push the stop loss to break even at 1 hour, and आई एम नॉट लुकिंग एट वन आवर एट ऑल. नहीं मैं यही देख Okay. रहा हूँ ना. अभी देखिए, अभी तेरे को लग रहा है इज द स्टॉक आउट ऑफ द वुड्स. no, not yet. तुम्हारा अगले कैंडल पे कब होगा पता है? इमेजिन इफ दिस कैंडल इज से अनदर 10 रुपीज अप. Hmm. ठीक है, अगर वहां से यहां तक आता है एक ही कैंडल के अंदर, इट्स अ मच वर्स ऑफ अ स्क्वाट. Yeah. ठीक है, अगर ये समझ यू गॉट वन, अभी ये सपोज यहां से कंसोलिडेट होने लगता है यहाँ पे, एंड देन इट गोज अप. डज इट रियली मैटर वेदर इट वाज 1 hour or 2 hour? People may keep a 2 hour kind of a logic also. No, we just used 1 hour as an example. But So very looking few for people will keep a one hour rule with a 1.5% stop loss. Anurag sir, one question actually. Ah. So the purpose of taking this trade is that magnitude, right? When we initially discussed, we are Mhm. going to play man. What is the purpose of raising stop loss within 1 or 2 minutes candles? Okay. I'll tell you You what. should When give you you should bind give up some a room to okay. should give some room, right? So when you are, there's a misconception. Okay. What is the difference between velocity and magnitude? Okay. The difference is not giving room to capital always. It is giving room to profit. Okay. Okay. Is this so whenever you're putting in a trade, no, there are two risks. Okay. The moment you enter the trade, you have risked your capital. Hmm. Okay. The moment you raise your stop loss to cost, okay, you have shifted your risk from capital to profit. Correct. Okay, now two things. If you're actually buying out of an anchor point, say like a tightness or a parabolic or a pullback, something, why are you buying it there? You're buying with the rationale that the demand should come immediately. Okay, Correct. what you and me are differing is how immediate should it be? Okay, Maybe you may say it may be 2 days. For me, it has to be 2 minutes, for example. Okay, now if you're saying 2 days, is it coming out with something that you need to give that room for 2 days to your capital? correct. Okay. My assumption is like if you are taking magnitude trade, you Hmm. might be taking with some catalyst or something news based or some event based. So what I thought is that you should give some room for that unless that catalyst has been failed. Correct. So Is it what not will you correct? give room to? Will you give room to risk to capital or risk to profit? So I'll show you another example. Okay. Now this was where I entered yesterday, say 631 types. Okay. 1.5% was my stop loss, Narendra. Okay. Okay. As of now, till close, it is what? Roughly about 25%. So roughly what? About 16 hour types. Correct. Okay. Now, say even though this is theoretical, suppose I keep my stop loss here. Okay. So I've given what? Nearly about 80 rupees of room. Correct. That is roughly about 8 hours. Correct. Why would I give it? Because I think that if it pulls back, it will have the strength to recover that pullback and go up higher. But if I was playing velocity, I would never trade this way. Correct. Or even if I tell you, instead of taking a 10 rupee risk here, 8x the size
and taken the matlab 8 hour kind of a trade, will you be taking that? No, no. No, na. So where is the risk actually getting asymmetric? It is not getting asymmetric here. It is getting asymmetric in profits. So when you actually scale up, no, you are not risking more capital. You are risking more unrealized profits to get higher realized profits. Got it. Okay, your capital is still always, even on a smaller scale or a larger scale, always going to be sacrosanct. That's what I said. I was always confused about this stop loss or selling to the strength or something. Uh, So do one thing. when to, Have you done that MAE MFE exercise? not it. Okay, so we'll do an MAE exercise. Okay, I think Harendra just started it. Do it. Just ask him also. Okay, find out all the MAE of your stocks once, Narendra. Okay, don't bifurcate between what is a magnitude and what is a velocity. Okay, take it and see your actual metric of what it is coming to. The market does not know whether it is a velocity or magnitude. That is an assumption you have taken for your trade. It is going to move the way it is going to. If you have taken a right entry, you are going to be risk-free very fast, irrespective of the objective. Okay. If it is that way, right, keep it at cost plus and let it go. Your worst case, what will happen is you will get shaken out at cost and then it will go up. That is what you are scared of. And that is Yeah. what you want to give room. See the number of instances practically that has happened to you. Okay. Because my entries are not proper actually. I know this. If the entries are not proper, then it's not a stop loss problem or an objective problem. Okay. If it is a loose entry, no. Okay, then a tighter stop loss or a looser stop loss is not going to help you because both may get stopped out with the same measure. Okay. Now, say for example, if it really has to squat, Narendra, instead of buying here, suppose I would have bought here. Okay. If it actually squats, both the entries can go for the toss. Correct. Okay. What you have done just here is at an early point when I was buying, I have just increased the odds of me getting out at a break even instead of a loss. Okay. Just an early entry does not make me a profit. It allows me more room for a break even. Okay. Correct? Chalo, I'll go ahead. हाँ आया पुल बैक हाँ अच्छा अभी बताओ इज दिस अ मच बेटर पॉइंट टू रेज माय स्टॉप लॉस अप Yeah. Loss. ठीक है does this show a demand pause demand resumption kind of a logic Yeah. ठीक है अगर समझो अभी यहां से अगर स्क्वाट होता है isn't that a much worse squat Hmm. correct चलो आगे जाते हैं so my stop loss is up to cost everyone is clear till here right Yes. cool ना अमित जी clear no ठीक है अभी मेरा नेक्स्ट डिसीजन क्या है सेल का ठीक है अभी अभी प्रॉब्लम है ना अभी कहाँ पे बेचना है वाला ठीक है अभी दोनों ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जाता है ठीक है हरेंद्र के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जाता है कि भाई जब तक एविडेंट वीकनेस नहीं दिखाएगा मैं बेचूंगा नहीं ठीक है दीपांशु तो कौन जो भी ले रहा था अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहा था व्हाट विल थिंक इज व्हेन डू वी सेल इनटू स्ट्रेंथ एंड हाउ मच डू वी सेल इनटू स्ट्रेंथ करेक्ट दीज आर आवर नेक्स्ट टू डिसीजंस Yes. करेक्ट चलो आगे जाओ okay is this extended enough should we be selling No. क्यों we are No. roughly at what 2 hour Sounds perfect. But how do you decide, Anurag, that it is extended? Because it can move another similar candle can happen in next candle, Yes. right? so I can't decide I'm asking you so extended यहाँ से और 3 बार ऊपर जा सकता है ना सजल Yeah. तो तुम सर्टेनिटी थोड़ी पूछ रहे हो यहाँ पे what am I playing right now I'm at 2 hour okay does this look like a good point to sell For 2 hour, you might not enter it actually. For short term, people will enter for 2 hour. no so people so someone like say Dipanshu or Sajat want to take in a short term trade they're not going to wait for days and take in a longer term trade okay But so I that's think two there's objectives you're playing with
Harendra wants to play it for the longer term. He is not thinking for the sell today. Okay, there are people who have entered for the short term and are going to look for the sell next. Correct? Let us work with both objectives. लाइक मेरा शॉर्ट टर्म भी 2-3 दिन लगता है, तो शॉर्ट टर्म ऐसे भी रखना चाहिए क्या? आई हैव नेवर थॉट दिस वे कि 2 आवर पे भी बेचते हैं, सो आई थिंक कि 2-3 दिन। तुम टाइम वाइज क्यों रख रहे हो? अगर 3 दिन में कुछ किया ही नहीं, सिर्फ 2 आवर तक भी नहीं पहुंचा, तो तुम फिर भी 3 दिन रुकोगे क्या? कि अगर अगले 5 शॉर्ट मिनट में ही 2 आवर पहुंच गया तो कि तुम्हारा सेल रूल ट्रिगर हो? नहीं, शॉर्ट टर्म में सेल ऑन वीकनेस, जब वो रेड कैंडल दिखाए फिर, शॉर्ट टर्म में सेल ऑन वीकनेस का क्या मतलब होता है? मतलब जब वापस आने लगे तो आई विल एटलीस्ट, क्योंकि अगर यहाँ पे अच्छा, अब अभी सपोज यहीं से नीचे गिर गया तो? वो ब्रेक इवन का फिर। नहीं नहीं, सो राइट नाउ व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट इज योर नेक्स्ट डिसीजन? दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. हम्म, So my question is, you are at 2 hour right now. Okay, when will you decide to sell? हाँ हाँ प्रीतु, कुछ बोल रहे थे. I was telling कि average volume भी if you see comparatively वो increase हुआ है. So I think there's still demand. So it will, can still go up. ओके, बट अगर एक बात बताओ प्रीतु, अगर ये नीचे आया, does it really need big volume also? No, obviously it doesn't need when it comes down. हाँ, ठीक है, पकड़ लो अगर लेना ही है तो. अगर ये देखो, अच्छा अभी ये डेली के हिसाब से देखो, इट्स डिसेंट वैल्यू फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स. ठीक है. हम्म. अच्छा, आई एम प्लेइंग बार बाय बार. आई कीप ऑन आस्किंग व्हेन डू यू वांट टू सेल. मे बी इसके नीचे, इस बार के नीचे स्टॉप, हाँ भी आ गया ना, हो गया, क्या स्टॉप हो आउट? गया। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म का होता तो स्टॉप आउट। कितने, कहाँ पे निकलता है? अगर शॉर्ट टर्म करना था तो उस जो लास्ट स्क्रीन वाली है उसके नीचे लगा दो, फिर वहां पे एकदम टाइट में ही यहाँ पे? बेचने के बजाय, हाँ यही लगा दो, ताकि अगर एग्जिट का सोच ही चुका हूँ यहाँ पे, तो मैं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जितनी, एग्जिट करना है क्या? मैं आई नहीं डोंट मैं नो तो नहीं कर रैशनल. रहा, मैं तो कोस्ट पे हूँ, आज का पूरे दिन का गया, मैं ये ट्रेड बंद कर दूंगा कोस्ट पे आके, इसको नेक्स्ट पे जाऊंगा। अच्छा दैट हाँ, इज व्हाट आई बाकी एम गोइंग टू। यहाँ पे बेचोगे? यहाँ पे कितना है? यहाँ यहीं पे तुम लोग का आधा खत्म हो गया एक कैंडल में. या बट इतना फास्ट फास्ट डील करने का वो मतलब नहीं बनता, मतलब नॉर्मली हैव सीन प्राइस वापस ऊपर चला जाएगा आफ्टर वन कैंडल, सो ऐसा तो क्यों नीचे भी आ सकता है? 10 हाँ में नीचे तो भी आ सकते हैं। इतना ही पता होता तो सजेस्ट शॉर्ट कर दो ना. नहीं, सो नॉर्मली आई हैव सीन कि वो नीचे आता है, पिवट के पास आके वापस इट विल रिवर्स, हाँ राइट? सो माय हाँ, इनिशियल एसएल विल सेव इट। अगर ऐसे करता हूँ, इफ आई टेक एग्जिट एग्जिट सो इमीडिएटली, एंड देन ऑल माय ट्रेड्स विल गो फॉर अ लॉस, लाइक ऐसा सब में हिट हो जाएगा एसएल। देख, व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, नो डोंट विजुअलाइज इन सर्टेनिटी. ठीक है, यहाँ से नीचे आके रिवर्स ही नहीं होने वाला. अगर होने वाला तो शॉर्ट कर दो विदाउट पोजीशन, फिर कमेंट्री मत दो. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे दस एनीवन से कुछ लॉजिक देख सकते हो टुवर्ड सेलिंग? मतलब ये जहां से डिमांड आया है वो वाले कैंडल को प्रोटेक्ट होना चाहिए, मतलब अगर सही में डिमांड है तो उसके ये नीचे वाला. अब की पैसे। हाँ, मतलब यहाँ से आया है, रिज्यूम हुआ है, तो अगर इसको तोड़ दिया तो फिर तो मतलब नहीं है। सो सपोज आई हैव तो एंटर्ड हियर, यहाँ पे 1.25. सो रफली व्हाट यू आर डूइंग इज यू एट अ 2 वन आवर आवर। रियलाइज्ड यू आर ट्रेलिंग एट 1 hour. हम्म, Isn't it micromanaging? It is micromanaging. We are playing for the short term. Obviously, you are going to micromanage. Anurag, if you see the prior uh, path, how the price has moved, it is taking the support at 10 EMA. So I'll give time till 10 EMA to come and reverse Okay, again. so what you're saying, Shiv, this part, right? This is of the previous day. Yeah. Okay, so this 10 EMA probably has to come from this day. Okay, so essentially, if you're seeing this, you're saying that my previous 10 minutes momentum should not be broken. The Mm. moment the stock even stagnates for 10 minutes, I'll be out. Indirectly, that's the rationale, right? Okay. Yeah. Mm. Correct? Yes. So you're not in giving the room a price point, you're giving it 10 minutes. If it Okay. squats or stagnates for more than 10 minutes, you'll be out. Correct? Mm. Is that the rationale? Mm-hmm. Yes. Okay. ठीक है, आगे जाते हैं. अभी कुछ है किसी का? नहीं। Mm-hmm.
नथिंग। Yeah. Nothing. अच्छा, अभी स्टॉप लॉस है किधर सब लोगों का? सो हियर यू आर आउट शेयर। Yeah. ओके, ठीक है। अभी सबका स्टॉप लॉस है किधर? Break even. Break कॉस्ट even पे ही पे। है। Cost मेरा plus. वो हाँ, कॉस्ट पे ही है ना, मतलब यू आर विलिंग टू गिव बैक योर 2 hour, राइट? Yes, yes. Yes. All of us were willing to give back the 2 hour. Yes. Yeah. Okay. Any change? no. No, still I'd at look cost for plus? pyramid. No change in stop loss, still at cost plus? इफ शॉर्ट हम्म, टर्म ट्रेड होता तो ये जो बीच में इसने बेस बनाया उसके नीचे रेज कर देता मैं, अगर मैं हाँ, एकदम हाँ हाँ इसके नीचे कर देता, अब कि इसको ब्रेक करेगा तो फिर वो हो ही गया आई गेस। अच्छा, तो ठीक है। बेटर तो प्रीवियस स्विंग लो रहेगा ना, अगर तो अगर तो वही break करना बारह हो सौ चलो, तो। एक बीस 5 मिनट पे डाल देता हूँ, हरेंद्र यहाँ पे बोल रहा है। हम्म। ठीक है, चलो और आगे देता हूँ। अभी कुछ चेंज? यू आर रफली एट व्हाट, 2 hour अगेन? एसएल को ऊपर कर सकते हैं, कहाँ पे करोगे? वो स्विंग लो पे कर देते हैं। यहाँ पे? हम्म यहाँ पे नहीं। ज्यादा टाइट हो जाएगा तो फिर We'll go हाई crazy. क्लियरिंग नहीं Doing आई है all अभी। this. अभी यहाँ पे करोगे? थोड़ा हाँ और अब वहां ऊपर पे जाएगा फिर एक और बेस बना ले फिर करेंगे ना वो। अब आप कर ऊपर कर सकते हैं। दिया, अब ऊपर वाले हाँ स्विंग पे कर दिया। कहाँ पे? यहाँ हाँ, पे? मतलब सेकंड लास्ट स्विंग लो, नहीं हाँ सेकंड लास्ट, इससे ऊपर, सेकंड यही लास्ट तो है। नहीं। ये वाला? हाँ यहाँ ये पे, हाँ यहाँ पे। अच्छा, ओके। हो गया। अभी यहाँ पे? हाँ नहीं यहाँ नहीं किया अभी तक, नीचे वाले पे ही है। तो बेसिकली डिसाइड क्या कर रहे हो कि कितना मतलब नीचे आएगा और मेरी कितनी फटेगी करके, वो बेसिस पे बस है। रैशनल वही लगा रहे हो ना, और तो कुछ रैशनल मेरे को दिख नहीं रहा स्विंग लोग के अलावा। हाँ हाँ ठीक है, वही ऐसा है। एक बार आ गया तो मतलब वो, अरे मतलब 3 बार मॉनिटर दबेगा। हाँ ओके। अच्छा, अभी आइडियली देख रहे हो फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। अभी सपोज आई टेक इट हियर, राइट? आई एम रफली एट व्हाट, 4 hour? यस नाउ विल यू सेल? नो, व्हाई? अब इतना ऊपर गया तो और ऊपर जाएगा ना, मतलब वो चिराग आई विल। मतलब वो चिराग सर वाली बात आ जाती है। अब मैं खुद को बेवकूफ नहीं दिखना चाहता हूँ कि बेच दूं तो ये और चले जाए वो यहाँ से नीचे आ गया, ब्रेक इवन पे आया तो कौन सा बड़ा बेवकूफ होने पे? हाँ पूरा हाँ, लूज करने वाला बेवकूफ कि यहाँ पे आधा बेच दिया फिर ऊपर गया वाला बेवकूफ? पिछले कुछ दिनों में तो पीछे ही वाला बन रहा हूँ, वो वापस आ जाता है फोर ऐसा कर करके। बुरा आ रहा। 3 आर पे लगा देंगे, 1 आर रिस्क कर देंगे प्रॉफिट का। 3 hour पे सॉरी क्या करोगे? स्टॉप लॉस, 3 आर हाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे और 1 आर का कैपिटल वो प्रॉफिट रिस्क में रहने देंगे कि लेट इट गो, अगर जाता है तो ठीक है वरना 3 आर बुक हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आइडियली अगर 3 hour में पकड़ूं 4.5%, तो रफली यहाँ पे आप डाल के छोड़ हाँ दो। यस। ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? So I usually trail by 5 minute 20 MA line, Anurag. 5 minute 20 हाँ, ये वाला येलो Yeah, लाइन। yeah. So when that breaks, right, I'll exit. So I normally put फाइव like मिनट 20 मतलब व्हाट, 100 मिनट? सो यू आर रफली एज्यूमिंग कि हर 1.5 घंटे का ट्रेंड ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1.5 घंटे अगर स्टॉप लॉस, अगर मतलब तुम्हारा स्टॉक स्टैग्नेट हो गया या ब्रेक डाउन हो गया तो हट जाओगे। बेसिकली वही बोल रहे हो ना? yeah, if that line breaks, yeah, हट जाएंगे। हाँ, So ठीक I है। usually have 2 legs of SL. एक रहेगा इनिशियल SL जो मैं बहुत धीरे धीरे फॉलो करूंगा, वो ज्यादा ऊपर नहीं करूंगा। एक रहेगा एग्रेसिव जो कि 20 MA वाला एक्सेल में वो एग्रेसिव रहेगा।
सो एक मैं पहले काट लूंगा, एक मैं चलने दूंगा। नॉर्मली दैट्स माय अप्रोच। ओके ठीक है। और नितिन, अमित जी? मैं तो एक्चुअली मैं मेरा एसएल जल्दी बढ़ाता नहीं, मतलब मैं एक्चुअली होल्ड करके रखता हूँ, तो मैं कोस्ट के पास ही रखता हूँ बस। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड ही खेल रहे हो ना हर इंद्र जैसे? हाँ हाँ, मैं लेता ही नहीं नहीं, इंडस्ट्री। ओ मेरे अच्छा, केस ठीक है, में भी यही दिनेश भाई रहता है बोल कि रहे। स्टॉप हाँ, लॉस जल्दी मैं ऊपर करता नहीं। अच्छा ठीक है। तो जो बेसिकली जो ये लोग ऊपर अभी नहीं तक कर रहा है कोस्ट पे वही भी। जो जो ऊपर नहीं कर रहा है स्टॉप लॉस, वही तो स्क्वाट का कंप्लेंट कर रहा था। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे और किसी का है कि सब लोग अभी भी कॉस्ट पे ही है? मतलब अगर ये एक चीज कोस्ट पे। मैग्नीट्यूड अगर प्ले कर रहे हैं तो स्क्वाट एक्सेप्टेंस लाना होगा क्या, कि स्क्वाट भी होगा तो ठीक है एक्सेप्ट करो। आगे लेते हैं, अभी के लिए सिर्फ वेलोसिटी लेके चलो। हाँ, ठीक है, लेट अस प्ले दिस डे आउट, देन विल लुक एट द अदर ऑब्जेक्टिव। अभी के लिए सिर्फ वेलोसिटी लेके चलो। अभी यू आर एट व्हाट 7 आवर, मतलब पूरे हफ्ते का तुम बना लोगे, सोचो। काटोगे? सॉरी, 5 आवर पे हो रफली। तो तुम्हारे जर्नल में एवरेज कभी 5 आवर नहीं आया होगा, सोचो। अभी काटोगे? मिनर्व बोलता है कि अगर आधा बेच दोगे तो 2.5 आवर जेब में आ जाएगा, जर्नल एवरेज इंप्रूव हो जाएगा, उतना तो आ ही जाएगा जेब में। पोजीशन साइज पे भी डिपेंड करेगा ना, अब आप पोजीशन साइज लेके बचो 10%, तो कोई फिर नया क्या नया होगा। फैक्टर कहाँ से आ गया? पोजीशन साइज का चलो 40% साइज है, उसके बाद बताओ। 100%। 100%, हाँ फिर काट सकते हैं। तब हाँ, काट देंगे 7% पोर्टफोलियो। तो अच्छा, तो 10% होगा तो नहीं काटोगे, 100% होगा तो काटोगे? हाँ ऑब्वियसली, वो तो फिर ज्यादा पैसा आएगा ना। अच्छा ठीक है, तो देखो ऐसा टेन रूल मैं परसेंट वाला साइज लिया क्यों? कैपिटल मार्केट में ना एक्चुअली ऐसा रूल बनाता रहता हूँ कि इतना 5-6% बढ़ेगा ना तो मैं प्रॉफिट बुक कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड वापस आ जाते हैं। और जब वो बढ़ रहा होता है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब 20% भी चला और जाएगा जाएगा। शायद आज तो हाँ सेम मुझे रुक लगता जाते। है। एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू सेड ना नितिन, इज द रीजन व्हाई यू आर फेसिंग स्क्वाट्स। ठीक है, होता क्या है ना, स्टार्टिंग में सोचोगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, डाउट होता है। यहां तक तो सबको डाउट था कि भाई होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, तुमको यहाँ पे दिखने लगा तो भाई यहाँ पे तो भाई, और ये तो मतलब पूरा मेरा वेल्थ, बच्चे का भी स्कूलिंग यही पे करेगा फिर क्या। हाँ हम्म। So the moment you start seeing here, or the moment you start becoming risk free, your fear level and greed level here are on two binary levels. यस। हम्म। ठीक है, यहां पे लगता है कि भाई सिर्फ अब हम लोग की जान बच जाए, और यहां पे लगता है पूरी जिंदगी यही बनाएगा करके। यस। हम्म, The trade is not going to do anything. The point is your objective is going to determine your selling. Start से लेके end तक अगर आप देखेंगे ना, every point that we started discussing, right? जैसे शिव ने कोई मूविंग एवरेज बोला, ठीक है, suppose you thought of an R level kind of, or you thought of a swing level. The only thing that you decided on how to sell was how much you are willing to lose. If you are not willing to lose more than 2 hours, then you are going to get a squat. If you have gone up to 5 or 6 hours and then still let the whole profit reverse, then you have let go of that 5 hour or 6 hour. Then don't complain of a squat. You will get either of the two things. ठीक है, या तो आपको सेल ऑन वीकनेस करना है या सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है। अगर पार्शियल करना है तो दोनों में से एक पोजीशन साइज आपका वो पार्ट में नहीं रहने वाला है। करेक्ट, इट इज वेरी मच वैलिड कि अगर यहां से पूरा नीचे आया, यू विल नॉट गेट दैट 5 or 6 hour ट्रेड। हम्म, हम्म, Till up to now, there is nothing which was showing uncertainty in this. So, which was showing certainty in this. The हम्म, only thing that was determining your sell was what? Your objective and the character, what it was showing. ठीक है, अगर मेरे को ट्रेल करना होता ना, सपोज मैं रूल बना था कि मैं 2 आवर पे ट्रेल कर रहा हूं, ओनली रैशनल वॉज भाई यहाँ पे कुछ वीकनेस नहीं दिखा रहा है, जैसे शिव ने बोला ना, ये 20 EMA का एवरेज लेके घूमता हूं, ये जब ब्रेक होगा तब मैं तोड़ दूंगा। ठीक है, एंड हाउ डू आई सेलेक्ट द मूविंग एवरेज? ऑन बेसिस ऑफ हाउ मच आई वांट टू लूज।
Correct. So it is a very valid strategy in choppy markets also. If you end up selling a lot earlier than what you want to keep your portfolio momentum going on. So if you ask me where I did, I sold it at 3R, I sold it at 5R. You did that? हाँ, यहाँ पे I had a 1.5% stop loss आदि. Within the first 5 hour, two-third of my position was off. And what position size? वही 25% types. You are creating the trend bar sell. हाँ? नहीं, थोड़ा पहले आ गए. When he's selling, it's falling. Okay. हाँ, तो ये बाई भी मेरे वजह से ही हुआ था ना फिर तो. So you held how much of the position for the next day? 1/3. I'll come to it. ठीक है, अभी ये देखो. Now it starts breaking down. ये देखो. I'll go नहीं. slightly ahead. ठीक है, ये अगले दिन है. ठीक अच्छा. है, अभी ये नीचे जा रहा है. अच्छा, अभी हरेंद्र बताओ, बेचोगे रखोगे? मैं कोस्ट से हिलाऊंगा ही नहीं, हम्म? मैं कोस्ट पे रखूंगा इसको। कॉस्ट पे ही रख मैं रहे हो ना, जब small or तक nothing, जब right? तक जब तक 10% 12% ऊपर, कम से कम 12-13% ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं हिलाऊंगा ही नहीं कोस्ट से। अच्छा, वो सेकंड लॉजिक पे आता है. अच्छा दीपांशु, अभी बताओ, अभी लग रहा है और ऊपर जाएगा करके? मतलब हाँ, यहाँ से तो लग रहा है अभी वो बेस लो स्विंग लो तोड़ा नहीं है, वहां से फिर बेस बना के ऊपर चला जाएगा. कौन सा बेस? ये 1240 के पास ये वाला, ये अगर तोड़ दिया तो? हाँ, मतलब वो साइकोलॉजी के लिए अपने रख लेते हैं कि ये बेसिकली एक मेंटल लेवल ही ले रहे हो ना, उसमें लॉजिकल लेवल तो नहीं है ना. जस्ट हाँ. थिंकिंग दैट यहाँ पे जो बायर्स है सपोर्ट कर लेंगे करके. हाँ. बट अगर मैं एक्चुअली देखूं, वो बायर लेवल तुम्हारा यहाँ पे कुछ रैशनल है उसका? अच्छा. एक्चुअली बायर नहीं सोच रहे, हम एक एंकर पॉइंट देख रहे हैं कि हाँ बस हाँ. इस लाइन के नीचे ना आ जाए, वैसा उसमें बायर है या नहीं, वो लॉजिक नहीं लगा रहे हैं हम। तुम अपना अगर इस इमोशनल डिसीजन ले चुके हो, तुम उसको सिर्फ बस, कोई लॉजिक के साथ जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हाँ बस वही है, बाकी ये एक देखा भी, ये हाँ इस लाइन पे चलो इसको रख लेते हैं कि इससे नीचे आया तो निकाल हो. दो, क्योंकि कोई तुम लॉजिक नहीं है रैंडमली उसमें। कहीं पे भी सेल करने के लिए तुमको दिमाग में आएगा नहीं, सो यू आर ट्राइंग टू फाइंड हाँ। आउट सम पॉइंट. हम्म। दैट्स इट. देयर इज नो अदर रैशनल. यस। करेक्ट. प्रीतु, एनीथिंग टू ऐड? I'm still at cost. स्टिल एट कॉस्ट, तो ऊपर से 5 आवर से नीचे आएगा, यू विल बी फाइन. Yeah, like I'm fine with it. ओके. I'm वैसे still at cost. वैसे कैसे चौपी मार्केट में इतनी जल्दी जल्दी ऊपर करते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द डे कट ही जाता है. ओके, ठीक है. हाँ, चलो, गया तुम्हारा दीपांशु लेवल अभी आउट. हाँ. बायर रीएंटर अगर सपोर्ट कर दिया, बायर्स ने वहां से एकदम धक्का मार दिया. अभी ट्राई टू री एंट्री, फिर अगर कुछ यहाँ पे ऊपर इमोशन डाल increase देते हुआ हैं, बच जाते हैं. फर्क पड़ता है कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. तुमने डिसाइड किया कितना हारने वाले थे, ये होने तो वाले. हाँ. ठीक है, अभी अभी समझो कि अगर जो प्रीतु ये बोल रहा है ना, हरेंद्र बोल रहा है, अगर पूरा 0 तक आ गया तो? So what they have risked is actually a 5 hour, right? They have not risked 1 hour. क्या है? और आगे जाता हूँ. थोड़ा आगे ले लो टाइम फ्रेम पे. Okay, बनाते हैं. या तो सॉरी, लेट मी टेक इट ऑन डेली राइट नाउ. अच्छा, अभी यहाँ पे हो. अभी कौन कौन बचा है ट्रेड में? हरेंद्र, प्रीतु और नितिन भी है ना? मैं भी ठीक है, हाँ जी। चल. मैं निकल गया था इस दिन, शायद मुझे थोड़ा सही नहीं लगा तो मैंने सेल कर दिया. क्यों, यहाँ पे क्या था? शायद इस दिन 1280-90 के करीब ही मैंने निकाल दिया था. आई डोंट नो, हाँ, क्या रैशनल आई है? डोंट रिमेम्बर. लग रहा था कि शायद नहीं जाएगा, ये रिवर्स कर जाएगा. मुझे याद बेसिकली नहीं आ कोई रहा गट एग्जैक्टली क्या इंस्टिंक्ट ही किया था. फॉलो कर रहे हो ना निखिल? हाँ, कुछ ऐसे लॉजिक नहीं लगाया था. हाँ, so then don't judge the outcome also logically. हम्म. स्टार्टिंग में क्या है ना, why the rules are many a times required.
I'll tell you, तुम्हारा rules are more required many a times in selling. Because most of the decisions that you are going to take in selling are never going to be completely correct. They will only be lesser wrong at the start. ठीक है? It was absolutely fine to take a हरेंद्र के लिए पूरा या प्रीतु के लिए 5 hours से 0 लेके आना if the objective and the risk appetite was that. हाँ याद आया। यही लॉजिक था कि इतने सारे ऊपर जाके नीचे आ रहे थे, तो आई डिड नॉट वांट टू लूज वट एवर लिटिल आई एम विनिंग हेयर। तो मैंने ये 1290 के आसपास इसको सेल कर दिया था, कि ये सोच के कि नीचे गया तो सब चला जाएगा। उतना उतना ही फर्क पड़ा ना, जो पहले दिन पे जो लोग बोल रहे थे कि इतनी फटेगी तो तभी बेचेंगे, तुम्हारी 4 दिन के बाद फटी। हाँ वही करेक्ट करेक्ट फर्क। करेक्ट। हाँ फाइनली रेशियो वाज दैट फटना कितना था वही ना, बेसिकली और कुछ तो रेशियो नहीं था। हम्म। सो व्हाट यू वुड हैव सीन इज कि भाई यहाँ पे तो चल ठीक है, बट यहाँ पे लगने लगा कि गिरेगा करके, एंड यू नहीं, डिसाइडेड वो एक्चुअली मुझे लगा कि 1300 के ऊपर सस्टेन करेगा, फिर वो 1300 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा था। बोथ ऑफ एक देम बार वो हैव पहले नो टच लेवल किया, स्लो। द पॉइंट इज बस ये व्हाट, कि वहां पे यहाँ से सेलिंग भी सेलिंग आ नीचे जाएगी। जाके वापस ऊपर आ सकता है नितिन। राइट, देखो बेचते वक्त तो ये सोचते हैं नीचे गिरेगा फिर ले लेंगे, पर वो लिया नहीं जाता। उस टाइम पे हाँ, कोई और ट्रेड में घुस जाते हैं। तो द प्रॉब्लम इज वेयर, द प्रॉब्लम इज इन लेटिंग गो ऑफ सम आउटकम, राइट? या द प्रॉब्लम इज अगर तुम यहाँ पे अगर बेच दे रहे हो, यू कुड नॉट हैव लेट गो ऑफ दिस। हम्म। और अगर तुम यहाँ पे सपोज तुम यहाँ पे बेच देते हो, तो यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस। हम्म। प्रॉब्लम इज इन द लेट गो ना, व्हाट आर यू लेटिंग गो ऑफ? ठीक है, अभी आगे जाता हूँ। हाँ, अभी हरिंदर कुछ चेंज नहीं, द नथिंग। स्टॉप लॉस एनीवेयर? नथिंग। क्यों? मैं एटलीस्ट कम से कम 12-15% का रूम देता हूँ उसको फिर। 12-15% का मतलब कितना, 7 to 8 आवर का? हाँ, लमसम इतना कम से कम। हाँ, दिस इज रफली अबाउट उसके जब 16%। मतलब बेसिकली बेसिकली 20 EMA मेरी प्राइस से ऊपर आना चाहिए। मैं 20 EMA को फॉलो करता हूँ। उसके नीचे डिसिसिव एंट्री होनी चाहिए, वो एग्जिट होना चाहिए। तो अभी तो 20 आया ही नहीं है, तो मैं उसका वेट कर रहा था। ओके। And this is exactly where I am confused. I get the stock till this point, and after that, I let go of all the profit. So I guess, like you said, it's basically I'm trying to think. I've been thinking everything is a magnitude trade. That's the only mindset. यू नो द यस। बिगेस्ट मैग्नीट्यूड ट्रेड का ऑब्जेक्टिव आने कब लगता है? इट इज नेवर एट द स्टार्ट, इट इज ऑलवेज इन प्रॉफिट। Hmm. Right. Where you start thinking that every 5 hours will end up becoming 50 hours. And then यस। you start pinning all your hopes into that one trade. तो quad future भी वैसे ही था ना आदि? Hmm. ठीक है? On that, you would have gone through some stress in the stock, then you applied a logic in it to justify that stress. Because Yeah. getting out of that stock would have been a lot more stressful than what you're facing right now. Hmm. Correct. अभी भी यहाँ पे the rationale of the let go, which was there at the time of the entry, has not changed. It has actually only increased. Because you are in a profit, or say 8 hour or 10 hour profit, whatever, if you end up losing that, it will be a lot more than the 1 hour trade that you had actually taken upon. So you're trying to say it's the greed which is making your decisions rather No, than even right now, what is it that you are letting go of? That is what is determining your decision. What you have let go of, I'll tell you what, if you are not decided to take it anywhere up, right? If you have still kept it at cost plus, Hmm. what you have let go of, कि भाई यहाँ पे ये वाला जो प्रॉफिट है ना, हाउ मच एवर दिस वाज 16%, राइट? सो 16%, हम्म। ठीक है। तो 1.5% स्टॉप लॉस था, सो वी आर रफली एट व्हाट, 11 आवर। ओके, व्हाट यू हैव डिसाइडेड दैट यू लेट गो ऑफ 11 आवर फॉर अ मच हायर प्रॉफिट देन 11 आवर। Hmm. ठीक है, सबकॉन्शियसली अगर पकड़ो, अगर 2:1 रेशियो भी पकड़ो, तो तुमने दिमाग में ये तो रखा होगा कि भाई 22 आ जाएगा यहाँ से। Double, not 30%. हाँ. अभी अगर तुम 2:1 रैशनल रखोगे तो करोगे ना, व्हाई वुड यू प्ले फॉर Hmm. 15 आवर बाय रिस्किंग 11 आवर? Hmm. Correct. So what Harendra Yeah. is right now doing is he wants a very big impact on portfolio. That's why he's playing a all or nothing. Okay. Now this is where यहाँ पे hybrid आ जाता है तुम्हारा आदित्य। ठीक है, when you go through, because you are a bit ahead in the lectures, I'll tell you, look at that.
ठीक है, where you balance the two to an extent. You also need to balance your portfolio momentum. You also need to play for scalability, both ways. Hmm. ठीक है. अभी हरेंद्र कुछ चेंज? Nothing. Nothing. Pritu, Nothing. I'll exit. you're out. I'm out. Sorry, this day I exited, not the previous day. देखो कौन सा ये? जिस दिन ये गिरा ना तो उस दिन एग्जिट किया कि सस्टेन नहीं कर रहा, छोड़ो इसको। अच्छा, ठीक है. स्ट्रक्चर तो ब्रेक नहीं करना। अब एग्जिट हो गया। And I'm out. So this is what's happening with me actually. I was not getting out at the first break. I was trying to hold it completely. And couple of trades actually taught me really hard. हाँ. I'm like, okay, let me have to be little logical about like portfolio चमन होते रहना चाहिए. Why not? Just get out of the trade. वापस मिल सकता है. अच्छा, जितना पैसा आया आ गया. ठीक है. अभी है ना, पूरा स्टार्ट से एक बार अपना पूरा जितने भी डिसीजंस लिए थे उसका फीडबैक लेता है. ठीक है. द फर्स्ट डिसीजन दैट वी टुक, से काइंड ऑफ, was to decide to play this for the velocity or the magnitude. What should our actual objective have been? Decide what kind of trade we are trying to take first. So mine was basically stick to velocity and move out at the last green candle or something like highest पे आ गया तो निकल जाओ वहां से. नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या था? Was this a short term trade or a longer term trade? What did the stock actually need? What was justified in this? It was a short term trade. आउटकम देख के बोल रहे हो कि कैसे? क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग था ना काफी. The run up was strong. It was what, 80% types we saw, no, in 15 days. Even the pullback was quite orderly. I have a bias actually saying that no stock can give you about 50% or more in a month. That's very rare. नहीं, ऐसा बहुत है. What will not make this rare? This is also rare only, no? ये देख कितने बड़े बेस से भी निकल रहा. The situation which we are in right now. हाँ, नहीं, कैटलिस्ट बहुत सारे हैं. There are many stocks. Your Quad Future as a catalyst, it has moved a lot more than 50%. Yeah, but that's for a month and again it's squatting. So it's given back most of the gains. Okay, ठीक है. So I'm now moving towards percentage based. अगर मैंने पहले I'm playing pure velocity. So अगर वो break even पे आता है to the higher point मैं निकल जाता है. ठीक है. Okay. तो अभी ये करंट उसको हम लोग को प्रेफरेंस देना चाहिए क्या सिचुएशन को, कि अगर सिचुएशन ऐसा है तो बस वेलोसिटी लो, मैग्नीट्यूड मत लो? ओके, ठीक है. आई एम आस्किंग. हाँ, वापस आता हूँ. I'll come to it. I'll answer. शिव, Yeah, नरेंद्र. yeah. During weekend, we learned that for longer duration of up move, it will try to create a base after a while. So that base duration will also be a longer duration because the up move was very fast. So it will take some time. So my thought was that the decision that we are trying to take here is for short term because it will go up and it will come down again. So valid. So what you are saying is, since the up move was very big, you are expecting a longer base to happen. So this is purely a technical bounce. Yes. Correct? And short term trade. Okay. Well, so just to, I took it with the same rationale. So yeah. Okay. हाँ. प्रीतु, नरेंद्र, सजत. So I usually think कि मैं अभी इसको as a technical bounce लूंगा, but till it goes to the it makes the high again, right? The top of the range, the resistance basically, and I'll sell it over there. That is the thinking basically behind the trade. ये But रेजिस्टेंस का कोई ज्यादा लॉजिक रहेगा if it is actually coming with force? no, logic is not there. It's just like there will be a small swing. So even if it makes 2-3 candles of green and goes till that level, okay, I will sell it there. ठीक So है. yeah, so नहीं, maybe ऐसा वो नहीं था सजत. हाँ. The question was whether the objective should have been short term or long term. What we are I doing mean, right now is every decision that we took, right, we are reviewing that.
Okay, now from an unbiased way, even though we know the outcome of whether it was correct or wrong. So one way that was कि शिव के logic से, even though the stock was strong enough, he only expected a technical bounce here. He was not very strong on the catalyst. Correct, Right. Shiv? Did I cover that? Yeah. Yes. Okay. ठीक है हरिंदर जी, यहाँ पे नहीं आपका लॉजिक क्यों था मैग्नीट्यूड का? व्हाई नॉट अ शॉर्ट टर्म? और हिंडसाइट में अब ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म होना चाहिए था और ये लॉन्ग टर्म का गलत सोचा था। बाकी मेरा ये था कि एक अच्छे मूव में आया है, एक थोड़ा सा पुल बैक आया है, देन उसी वेलोसिटी, उसी मूवमेंट, उसी स्पीड के साथ ये वापस ऊपर जाएगा। हम्म इट विल ओके स्टार्ट इट्स नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव। ओके क्या रीतु, एनी चेंज इन ऑब्जेक्टिव? अमित जी? मुझे तो ये लगता है कि जैसे अगर ये अर्जेंसी जितनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के जा रहा था, तो ये जब ये वापस गया था, तो अगर पुल बैक जो बड़ा आया है जो लास्ट में, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। वो मतलब हो सकता है पुल बैक भी होता है, लेकिन वो छोटा होता है बेसिकली ना, वो वहीं एमएस को कैच करें और फिर वापस से भाग कौन जाता सा, है। कई ये बार ऐसा वाला होता पुल है ना। बैक बोल रहे हो? हाँ, ये वाला जो सेकंड वाला, कि ये वहीं एक दो दिन साइडवेज होके और एमएस पास जाती है और नहीं ना, देन। ऐसा क्यों होगा? वैसा ड्राइंग जैसा थोड़ी बनाएगा, रैंडमली तो कुछ भी हो सकता है ना चार्ट। हाँ, रैंडमली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पीछे मूवमेंट देख के, जैसे रामकोसिस में तो ऐसा ही बना। नहीं, रैम का उसमें सिर्फ वो भी नीचे आ सकता है। हाँ। नहीं, वो मतलब कुछ में होता है इसीलिए वो, अब जो चार्ट देख के AGS फिर log लगता में है। वैसा वैसा AGS logistic एजिस लॉग भी उसने भी अच्छा बीच में हल्का सा पुल बैक देके फिर भाग गया था वो। हाँ ओके ठीक है। तो फर्स्टली लेट अस इवैल्यूएट वेदर द ऑब्जेक्टिव वाज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज्यादा स्क्वाट्स पे जा रहे हो, राइट, go back to your trades and firstly see whether the objective was of the stock that you took required a velocity or a magnitude trade। ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करते हो, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वेलोसिटी ट्रेड्स एज मैग्नीट्यूड ऑन 2 points। ठीक है, either you have not judged the character of the stock very well or the technical or on the capitalist level। One। सेकेंड, बहुत बार क्या होता है, एज दीपांशु ने बोला ना, थोड़ा प्रॉफिट जाता है एंड यू कन्वर्ट दैट वेलोसिटी इनटू अ मैग्नीट्यूड एंड पिन ऑल योर होप्स इनटू इट। हम्म, ठीक है, तो उसमें वो स्टॉक भी ने अभी बोला था, जस्ट टेकिंग बाई टेकिंग अ 2 hour और अ 3 hour काइंड ऑफ अ ट्रेड एट टाइम्स डज नॉट कम डाउन बिलो योर डिग्निटी। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट यू ऑलवेज नीड टू बाई ओनली फॉर 20 hour ट्रेड्स। इट्स गुड इफ यू गेट इट, but many a times the practical reality of trading is that you need to keep your portfolio moving. You need to keep it in momentum. ठीक है, so a lot more of times you need to work for regularity of profits than magnitude of it। ठीक है, especially if you are going to dedicate a lot more of time or are trying to do it full time। ठीक है, that is what is many a times actually needed for your mental sanity। This is anyway a tough game। Don't make it tougher for yourself by only trying to hit sixes। right। ठीक है। एग्जैक्टली। सेकंड, अभी ये जब सेलिंग ले रहे थे स्टार्ट टू एंड पे, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट पे, डू यू थिंक दैट वी एक्चुअली अडेप्टेड अवर डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट द मार्केट वाज गिविंग अस एट दैट पॉइंट? नो। No, we haven't. ओके, सो अगर मैं डे 1 पे पकड़ू ना, यहां पे जब ले रहे थे, व्हेन वी टुक इट हियर, सपोज इवन इफ आई हैव जस्ट अ 3 hour काइंड ऑफ अ रूल, ठीक है, सपोज मेरे को 3 hour पे बेचना है, ओके, बट इफ द स्टॉक इज स्टिल शोइंग स्ट्रेंथ, कैन आई बी एडेप्टेबल? जैसे शिव ने बोला था ना, लेट मी जस्ट फॉलो अ स्टूपिड मूविंग एवरेज एंड सी। ओके, आई थिंक व्हाट वर यू फॉलोइंग शिव, 10 और 20 वॉट एवर, ठीक है, अगर 20 ले Yeah. रहे थे, जज ने 20 बोला था, 20, राइट? yeah. Yeah. ठीक है, 10. तो आई वुड हैव व्हाट गॉट इन चिकन आउट हियर। ठीक है, what would I have still done is instead of selling at 3 hour, I would have sold here later in the day at a much higher price। Yes. Okay, but I have still not changed my complete objective of the trade। I have only adapted that particular decision in front of the screen that the real time market is giving me। ठीक है, तो जब आप अपना डिसीजन इवेल्युएट कर रहे हो ना, देयर इज अ सर्टेन स्ट्रक्चर दैट यू मेंटेन एंड विद इन दैट स्ट्रक्चर यू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी।
आप वो स्ट्रक्चर को ही फ्लेक्सिबल कर दोगे तो हर बार डिसीजन मेकिंग इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा दैट यू विल गेट लॉस्ट. Correct. So go with a certain structure in a trade, and then within that structure you can adapt what you want. ठीक है. और फिर सबसे पहले उसमें आप लेट गो डिसाइड करो कि व्हाट आर यू एक्चुअली लेटिंग गो ऑफ. Now, when Harendra says that he is letting go of a 12-hour profit, expecting a much bigger profit to come in later, that is also a valid let go. A let go also is that if I'm selling at 3 hour and I'm not waiting for a longer trade, that is also a valid let go. Only what makes it valid is what is the character of the stock that I'm seeing and what is my particular objective of that trade. If I'm not doing too well, say for example, I'll play it as a velocity because I need portfolio momentum. Okay. The most important part of it is how your portfolio is moving from a month on month on a scalability level, not on a trade level. So if you think that you have gotten 15 trades, ठीक है, तो आप ये एक्चुअली रेशियो कंपेयर करो कि ये जो कैप्चर रेशियो कर रहे थे ना, फॉर एग्जांपल इनफैक्ट वी डिड इट विद अभी दिनेश ने किया था, काफी अच्छा किया था. वेट अच्छा. See. Yeah, can you see this? This is what his last 3 months looked like. ठीक है. अप्रैल में he was actually losing it. April was actually a stronger month. ठीक है. Yeah. मई और जून अगर आप देखोगे was actually tougher months to trade. Yes. Yeah. ठीक है. हुआ क्या ना, we actually started working on this pure capture ratios. See this. See where it changed to. And it is not that he actually started getting much bigger winners. We just changed the objective and the selling rules to capture more of upside. ठीक है. सो So इवन actually, इफ इट इज गोइंग टू 2 hour, राइट, सो अभी जैसे अमित ले रहा है विद एन ऑल और नथिंग एटीट्यूड, दैट में बी ओके. ठीक है. बट इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रेल इट फास्ट, योर अपॉर्चुनिटी विच यू हैव लॉस्ट, मतलब द प्रॉफिट्स विच यू हैव लॉस्ट शुड नेवर बी मोर देन द प्रॉफिट्स दैट यू हैव वन. ठीक है. यू कांट गो टू अ 5 hour, ठीक है, एंड कट इट जीरो एंड से दैट द स्टॉक स्क्वाटेड इफ यू आर प्लेइंग a velocity trade. That's a crime. that is what is happening. ठीक है. एंड इफ यू आर डूइंग इट बैक एंड बैक अगेन, गो बैक टू योर ऑब्जेक्टिव एंड सी वेदर द ऑब्जेक्टिव दैट यू आर कमिंग विथ इज करेक्ट और नॉट. तो अगर आप ये देखोगे ना, सी नाउ द 5 फॉर ट्रेड्स अबव 5 hour हिज कैप्चर इज 68%. ठीक है. तो यहां पे जो जो हुआ था, राइट, on a higher time frame, we are always selling into weakness. So we are capturing, we are seeing the capture ratio separately based on objective. We are taking it separately on magnitude, separately on velocity. करेक्ट. तो जब मैं नेटवेब जैसे स्टॉक्स में देखूंगा स्टार्टिंग के एग्जांपल में, आई एम सीइंग कि भाई मैंने कितना रूम दिया है, जैसे हरेंद्र दे रहा था, whether my objective of the stock was correct and how am I trailing it. But if it is velocity, ठीक है, then I need to capture it very fast. It has to rotate my portfolio as fast as possible because the edge there does not lie in expectancy, it lies in frequency. ये एक्सरसाइज में 1.5 महीने पहले करता तो इतना प्रॉफिट कमाता ना. आई एम एक्चुअली एट जीरो. इस एक्सरसाइज में मेरा एक भी किसी भी स्टॉक में मैंने कुछ बुक ही नहीं किया, कि सब में मेरी कॉस्ट पे आए हैं सारे स्टॉक लाइन से. और आई थिंक अराउंड 15%, 18%, 20% तक ऊपर जा जाके आए हैं स्टॉक्स. सो एक्चुअली जैसे तो अपोलो क्योंकि था, आप क्या कर रहे अपोलो हो ना नरेंद्र जी, if you're playing an all or nothing, right, you will go through that and but you are not accepted your let go. आपने एक्चुअली उसका रिपरकशन सोचा नहीं है. अभी तक मिला नहीं ना सर ऐसा विनर. मैं वेट कर रहा हूँ ना कि वो आएगा, तब उसका मजा आएगा कि हाँ यार इतना दिन किया उसका है. अभी तक जैसे मैं अपोलो के अंदर मैं 5% मेरी पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट लेके बैठा था, और जब मैं बहुत ड्रॉ मतलब एक्चुअली आई वाज इन ड्रॉ डाउन, और उस वक्त भी दिख रहा था, उस टाइम भी मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम फॉलोइंग द रूल, इट्स ओके, नो इश्यूज, जाने दो. तो उस टाइम भी मैंने नहीं किया था. अभी भी मैं वहीं पे हूँ, लेकिन वही है, वो आपने भी बोला स्टॉक भी वाला, वो मैंने भी पढ़ा था कि स्टॉक भी बोल रहे थे कि यू कांट गो फॉर होम रन एवरी टाइम. सो एक्चुअली दैट इज व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट इज रॉन्ग इन दिस कंडीशन. इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस कंडीशन. एक्चुअली आपका ट्रेडिंग मैच्योरिटी कब आएगा पता है हरिंदर?
when you're not playing for big moves, you're playing for bigger size in an average move. अभी जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, ये स्टॉक देख रहे हो, ठीक है? हम्म फ्रॉम द स्टार्ट टू नाउ इट यस इज हार्डली व्हाट 20%, हम्म ठीक है? नॉट अ वेरी बिग मूव 1.5-2 महीने के लिए हम्म कंपेयर टू वेयर द हम्म मार्केट हैज गिवन यू, हम्म करेक्ट? अभी ये केस में आई हैव टू एंट्रीज, ठीक है? एक यहाँ पे था, एक हम्म यहाँ पे था, रफली अबाउट हम्म 2150, ठीक है? हम्म तो अगर मैं यहाँ से अपने एंट्री पॉइंट से पकड़ूं, इट इज रफली अबाउट 15% अप, hardly any हम्म move, not a big move, हम्म but I have roughly a हम्म 75% size on this. यस This will end up giving me 12% right now यस on a very small move. Your actual यस trading expertise comes when you have a big size and the move, even if it is small enough, right, will end up giving you a big impact on portfolio. यस यस आपका certainty of portfolio returns and scaling up is a lot more in such trades than in finding out 100% trades. ये just dial जैसे ट्रेड यस है ना, ये रैंडमली मिलता है, हम्म ठीक है? और ये इतना जल्दी भाग गया ना, आज तो ये खरीद के मतलब बेच के खरीद दिया, वापस आ गया, बट कल तो ये वापस बिकना ही है, हम्म कल ये और ऊपर जाएगा तो वापस सेल इसमें ट्रिगर होने वाला है, हम्म ठीक है? नाउ दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो, बट दिस इज अ वेरी रेयर इम्पैक्ट, but you are going to have 20-30% moves every quarter consistently. So the skill, यस if you're able to size up that better, right, you'll have a much better portfolio impact. तो आप अपने आप को ओके साइजिंग के थ्रू ऐसे पोजीशन में डालो ना हरेंद्र, साइजिंग और एंट्री हम्म के थ्रू, दैट इवन अ हम्म स्मॉल मूव इज गोइंग टू हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन योर्स. उसने So तो your edge ओके is not ओके always in finding the right stock. It is in हम्म playing an average stock in such a way that it gives you the right return. पोजीशन साइज का ही ओके रोल हो गया सारा का सारा। आप पूरा ट्विटर पूरा समाज ले लो ना अमित जी, आज के दिन पे एवरीवन इज हम्म लिटरली घूम फिर के वही स्कैन कर रहा है. हम्म यस आज अगर मैं स्कैन करूँ सबके वॉच लिस्ट में वही 25-50 स्टॉक आने वाले, कोई फर्क नहीं है. यस इश्यू में उतने ही है, कॉन्ट्रैक्शन उतने ही दिखा रहे हैं, सेटअप उतने ही होने वाले, कोई नया नहीं है. हम्म आपका पोर्टफोलियो रिटर्न सिर्फ दो ही चीज पे चेंज होता है, ठीक है? आपने उसको साइजिंग अप कितना किया और कैसे मैनेज किया, दैट्स इट. हम्म स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में कोई बियॉन्ड अ पॉइंट बड़ा स्किल नहीं है. ऐसा कोई मैं स्कैन कर दूं क्लॉड पे रोज वो 50 स्टॉक आते रहे, वो तो चैट जीपीटी भी देता है। स्कैनिंग में कोई स्किल नहीं बियॉन्ड अ पॉइंट. स्कैनिंग इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी. if I start doing this frequency and raising stop loss fast, protecting capital, increase position size, and then ये जो अभी हमने एक्सरसाइज की है कि हम कितना रियलाइज कर पा रहे हैं उसको, तो दैट विल बी ए वेरी गुड स्लोली स्लोली ये एक स्टेप वाइज की ये भी एक अच्छा वो है कि वो जीरो पे आ रहे हैं उससे तो काफी अच्छा हो जाएगा. भी फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, कैपिटल सेव कर रहे हैं, और जैसे ऊपर जा रहा है अगर कैपिटल साइज मतलब पोजीशन साइज 40% है तो मैं 10% अगर 2 और 3 आर पे भी निकालता हूँ, इट विल स्टार्ट गिविंग इम्पैक्ट ऑन माई पोजिशन. बट स्टॉक भी फॉर क्या दैट आई हैव करता है, टू स्टॉक भी टेक्स इन अ सीधा 125-150% साइज, वो हम्म विद इन द फर्स्ट इनिशियल आई थिंक 2 to 5 आवर मेजोरिटी निकाल देता है, 80% ऑफ साइज इज आउट, ओके ठीक है? हम लोग बहुत बार क्या नहीं समझते हैं ना, ये जो छोटे रिटर्न्स का जो कंपाउंडिंग आता है ना, दैट बिकम्स वेरी बिग. हम्म एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई टेल यू व्हाट इट हैपेंस. जैसे हम लोग के ग्रुप में मतलब चार्टर बहुत है, ओके, बट इफ यू सी अ लॉट ऑफ चार्टर, व्हाट हैपेंस, ट्रेडर्स में साइकोलॉजी भी क्या होता है ना, दे ट्राई टू सेल्फ डेप्रिकेट देमसेल्व्स एंड दे आर ट्राइंग टू बी फनी. ऐसा नहीं है कि नहीं, दे आर ट्राइंग टू डू इट डेलिबरेटली, बट हर बार यही बोलते हैं ना कि भाई मैंने ले लिया तो गिर जाएगा स्टॉक, ठीक है? हाँ मैंने बेच दिया. नाउ दैट इज अ नॉर्मल फनी टोन, आई अंडरस्टैंड, बट व्हाट हैपेंस इज दैट इट इज नॉट ओनली अबाउट द ह्यूमर ऑफ इट. Most traders are always depressed because the business is such. You're never going to be right. You're always going to be feeling like an idiot. ठीक है? आपका ये जो क्विक आंस करता क्या है पता है? It gives you a mental comfort that your portfolio is growing and it is growing fast. जब यस पार्टिसिपेशन डिस्काउंटिंग होता है ना, सबसे पहले आप अपने आप को एज अ ट्रेडर डिस्काउंट मत करो.
ठीक है, यू विल कीप ऑन गेटिंग मल्टीपल ट्रेड्स इन अ मंथ, बट यू हैव ओनली वन ट्रेडर विथ यू टू प्ले. So many a times it makes a lot more of sense to actually play for that mental sanity and portfolio growth than many a times the market or the stock in itself. इट एक्चुअली हैपेंड विद मी, मतलब लास्ट जो ये लॉसेस हुए ना उसके बाद में आई लिटरली, मतलब जो आप बोल रहे हो ना ये सब सही में हुआ कि एक्चुअल में कैपिटल उतनी नहीं खोई जितनी मेंटल कैपिटल खोई है. इट हैपेंड. और चीजें दिख रही है कि यस इट विल वर्क आउट, इट इज वर्किंग आउट, बट कॉन्फिडेंस स्टार्टेड डेप्रिसिएटिंग, उसके साथ पोजीशन साइज छोटी होने लग गई है. अदरवाइज और मैं इसका उल्टा 30%, इफेक्ट क्या थर्टी फाइव होता है परसेंट हरिंदर? जैसे आपका कॉन्फिडेंस आने लगेगा, राइट, यू विल स्टार्ट पुटिंग इन अ लॉट मोर ट्रेड्स विथ मच बिगर थिंग्स. यस यस यस. बिकॉज द काउंटर ऑफ इट ट्रेड्स आपको जैसे ही ड्रॉडाउन में आने लगे ना, आप करोगे क्या? ब्रेक ले लोगे. हम्म. The moment you have taken a break, your frequency and expectancy has again gone down. So now you need to catch up to the days that you have lost, either by taking bigger trades or by earning more. हम्म. With a serious business, even though it is needed at times, you cannot keep your office shut for 15 days. No? यस. But to increase size, right, Anurag, I mean, it needs courage as well, right? और Like, वो करेज कैसे आएगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से ना सचित. so small runs लेते जाओ, singles लेते जाओ, and then build on top of it. So Preetu is there, but still I'll tell this. Stockbee has this very shitty example. ठीक है, वो बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम 80% ऑफ द टाइम्स उसके पास जाते हो, वो तुम्हारे पास लात मारती रहेगी. विल यू कीप ऑन गोइंग बैक टू हर? Yes. No, you will not go. I should not go. That So that finally what you need, no, to stay in a business is positive reinforcement. yes. ठीक है, सो हर बार इतना डिफिकल्ट अपने लिए गेम मत बना दो कि तुम भाई कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहे हो. यू आर डूइंग अ सिंपल ट्रेड, रूम में बैठ के लैपटॉप पे 10 बटन दबा रहे हो. द ओनली थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज मेक मनी फॉर योरसेल्फ. कोई झंडा फटे नहीं कर रहे हो. ठीक है, मेक द गेम सिंपलर. If it is fine, you will get 20 hour opportunities, but if you're struggling mentally, it makes sense to at times work for that. Yes. Don't make the game harder than what it is. And somehow I'll tell you, I don't know why, I find this more with Indian traders. When we used to work, when I used to interact with foreign traders, it was completely the opposite. हम लोग को इंडियंस में है ना ये पेन में बहुत प्लेजर मिलता है. हम लोग एकदम प्रॉब्लम को अगर डिफिकल्ट करके उसको सॉल्व करने जाएंगे ना, तब ज्यादा खुशी होती है. प्रॉब्लम सॉल्व करने में खुशी नहीं होती है.